Here in our topic today, we are using the word employability, which presupposes an employer and an employee. However, ladies and gentlemen, our constitution mandates the common good and warns us against the common detriment. Article 39B says that the ownership and control of the material resources should be so distributed as best to subserve the common good. And 39C says that the operation of the economic system must not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. So the phenomena of common good and common detriment begin from appreciating the significance of equitable distribution of resources in the society. This is also mandated in the Holy Quran, incidentally, 59.7, which says that so that the wealth may not remain confined solely among the rich. However, friends, the sad reality is that both of these constitutional and scriptural mandates are observed more in breach than in compliance. This may be caused by insufficient sanctions and lack of fear of consequences in the human psyche. Thus, breach of the common good does not stir the human conscience. So, one important remedial measure is to keep sensitizing the people. That is the duty of not only the state, but also of the civil society, and more so of the parents and other family elders. Adequate upbringing of the children is vital for this purpose. And the state actors too are expected to be the role models. Lowering of democratic standards should not be allowed to degenerate the moral standards. Now, looking inwards, the poet says, Zindagi jehd ast wa istihqaq nes. Life is struggle and perseverance. It's not a right to be just taken away. Zindagi jaddojuhad hai, sangharsh hai, haq nahi hai. Second premise which I am making here for a submission to you, that millat andruni taur par khud kafeel hai. The community is internally self-sufficient, समुदाय भीतर से स्वतः पर्याप्त है. और थर्ड सबमिशन इज दैट चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से मुस्कुराया करो. दैट इज द सॉल्यूशन. उसके लिए वी प्रोसीड नाउ. We need to invoke the power of charity, coupled with selfless perseverance, which is known in the Holy Quran as Ulil Afwa 2.219. Hardly any people know about it. I also didn't know about it till 15-20 years ago. So, there is the mandate that whatever is required justifiably for you and for your family to have a very good life, that much only belongs to you. The remaining that you have, which I have, God says, which I have given to you, does not belong to you. But I am testing you how much zarf you have got, how much shraddha you have got to spend it for others. वहाँ कमी है हमारे अंदर. Friends, we are welcoming our upcoming generations to the world of awakening under challenging circumstances. However, the silver lining is that God has blessed many of us, and definitely all of us in this hall, with born capacities to play a useful role in ameliorating the plight of the less blessed. I am educated. I should not allow myself to remain oblivious of the higher spiritual purpose of my life.
My mood lesson taken from the current situation is that I have to better understand my faith and I have to enhance my vigil within the community as well as for the society at large. The real test of a true believer's devotion to God lies in what she or he does during the period intervening two consecutive prayers. That is the reality. So, what is the lesson? We should properly diagnose the malaise and try to change the course of the stream through benevolent interventions. हमें चाहिए कि हम अपनी बेकरारी की तशख़ीस करें और नेक निहात हिकमत अमली के ज़रिए बहते हुए चश्मे का रुख मोड़ दें. इसीलिए शायर ने हमको कहा है और अल्लाह ताला का पैगाम है वो कि रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का. हम भेज सकते हैं, दैट इज़ अप टू अस. हम लोग बस ये है कि हम सोचते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी दूसरे पे डाल दें या हुकूमत पे डाल दें. सो व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म आंसर? तवील मुद्दती एम्पावरमेंट थ्रू वेल थॉट आउट सिस्टमैटिक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. जब ज़रूरत हो हिकमत अमीरी में तब्दीली कर लीजिए. पॉइंट टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. अभी किसी साहब ने कहा था तो करना क्या है, डेटा है. मैं वो सब बातें बता रहा हूँ जो करना है. हम में से हर एक अगर कुछ न कुछ करने लगे, और मैं जानता हूँ कि हमारे पैदा करने वाले ने कहा है कि कोई बात किसी को तब कहो जब पहले खुद करते हो. तो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ वो सब कुछ करता हूँ बहुत दिनों से. सिविल सर्विसेज में एनुअल इनटेक 1100 हुआ करता था, बढ़ के 1250 भी हुआ था. वो काम अभी सुबह जिक्र भी आया, हम बहुत दिनों से कर रहे हैं 15 साल से, बहुत कामयाबी है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन एनुअल इंटेक ही कम हो गया, बहुत घट कंटिन्यूसली घटता जा रहा है यूपीएससी का एनुअल इंटेक. सेकेंडली देयर इज नाउ लैटरल एंट्री. जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो होता है 16-17 ईयर्स का जब आईएएस ऑफिसर हो जाता तब वो जॉइंट सेक्रेटरी बनता है. तो डायरेक्ट नाउ अब डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर फ्रॉम कॉरपोरेट सेक्टर. उसमें कोई हर्ज नहीं है, गवर्नमेंट की मर्जी है, वो उनका डिस्क्रिशन है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है. लेकिन हमें अपनी हिकमत अमली, अपनी स्ट्रेटजी में चेंज करना पड़ेगा. एंड व्हाट इज दैट? डू एम फॉर द मून बट ट्राई टू लैंड at least in the stars. That is, do prepare for civil services, but also simultaneously appear for central police organizations, state services examinations, staff selection commissions, bank probationary officers, and so on and so forth. There are about 500,000 recruitments, Syed Siddiqui sahab, in the country, in different states and in the center. There are 500,000 annual recruitments done at different levels to work for the government. This is other than civil services. And the community is just not bothered about it. We have started this Zakat Foundation of India more than 2 years ago, and I am introducing to you here the convener of Zakat Foundation of India in Lucknow, who is doing this work only, Mr. Atiq Ahmed Siddiqui sahab. Can you stand up so that everybody would look at you and we can clap for him also. He retired as Joint Secretary to Government of Uttar Pradesh and alhamdulillah has been devoting about 10 hours every day. We have a unit here जिसमें मोर देन 45 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट जुड़े हुए हैं. ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, रिजल्ट आना शुरू हो गए, सक्सेस हो गई शुरू. तो ये काम बड़े लेवल पे करना पड़ेगा और इसमें जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल, सबको जुड़ना पड़ेगा. और मैं आपके लिए ख़ासतौर से AEEDU की तवज्जो इस तरफ दिलवा रहा हूँ. सेकेंड बात यह है कि कुल ज़मीन की मिल्कियत परवरदिगार की है और उसमें से कुछ हिस्सा कुछ बरस के लिए कुछ अफराद को निगहबानी में, उनकी निगहबानी में दे दिया जाता है. फिर उन अफराद का इम्तिहान होता है कि उनमें कितना ज़र्फ है कि वो अल्लाह की अता करदा जायदाद का इस्तेमाल देकर ज़रूरतमंद अफराद की इमदाद के लिए कितना करते हैं कि नहीं करते हैं.
मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास दर्जनों एकड़ ज़मीन है, तो ये लोग नस्ल दर नस्ल इस ज़मीन में से खुद के लिए सिर्फ अनाज लेते हैं। बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मुख्तलिफ इलाकों में भारी जायदाद है जो उनकी ज़ाती ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। जबकि सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में ये आया है कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दिया है कि तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है ही नहीं, बल्कि उस पर ज़रूरतमंदों का हक़ है। लिहाजा जिन अफराद के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन जायदाद बिल्डिंग हैं, उन्हें अपनी जायदाद का इस्तेमाल करके तालीमी इदारे कायम करने, दैट इज़ द सोल्यूशन। ये सब मुमकिन है और ये कुछ लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। ये मैसेज जाना चाहिए सबके पास। अब जैसे ये 2.5% ज़कात होती है, हम सोचते हैं 2.5% दे के छुट्टी पा गए, असली इम्तिहान बाकी 97.5% में है। दैट इज़ गॉड्स स्कीम, वो हम नहीं समझते। इसलिए कि जो 97.5% बचा, वो बचा हुआ हिस्सा किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 10 मिलियन है, किसी के पास 10 बिलियन है। हर एक के लिए ये नहीं हो सकता कि वो तुम्हारा कुछ भी करो। नो, सिर्फ ज़रूरत जितनी है हमारी उतना ही हमारे पास है। ये चीज़ जुमे के खुतबे में बतानी चाहिए। जुमे के खुतबे को हमें मॉनिटर करके उसको एनरिच करने की बड़ी ज़रूरत है, ठीक है। देन कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट इज दैट द स्टेट शैल प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो हम वो कर सकते हैं, करना भी चाहिए कुछ लोगों को, लेकिन हमें इंटरनली देखना पड़ेगा कि हमें ये मान के चलें कि हुकूमत नहीं करेगी तो फिर तो हम फिर भी जिंदा रहेंगे, फिर भी तो हम प्रॉस्पर करेंगे। दैट इज़ अवर ड्यूटी। लिहाजा अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में सिर्र आदम है, ज़मीर कुन फ़का है ज़िंदगी। इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी रियली लिविंग पर्सन, create a world by yourself. Such proactivity is the essence of human life, which must manifest godly quality of creation. क्या करना है? कम्युनिटी रीडिंग रूम्स, कम इंफॉर्मेशन सेंटर्स कायम करने हैं। हर जिस आदमी का घर में एक कमरा फाजिल हो वो दे दे मोहल्ले के बच्चों के लिए कि यहाँ ये टाइमिंग्स हैं, यहाँ रीडिंग रूम बना हुआ है, इंफॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, ये करना पड़ेगा हमें छोटे छोटे लेवल पर। और ये मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, जितनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ वो बहुत इंडिविजुअली एंड इंस्टीट्यूशनली वी हैव बीन डूइंग। वी हैव टू एस्टैब्लिश स्कूल्स पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स वगैरह, वो तो रिपीटिशन है। गवर्नमेंट की स्कीमों की बात हो रही थी। HRD मिनिस्ट्री की स्कीम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट एंड अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये एक HRD मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। मैं आपको वो भी दे रहा हूँ, यहाँ लिंक भी दे रहा हूँ। या अभी जो साहब सुबह कह रहे थे कि हमारी प्रॉब्लम है ना, ये स्कीम है। आर वी अप्रोचिंग द गवर्नमेंट फॉर दिस? अप्रोच करके फेल हो जाए वो अलग बात है, फिर हम है ना मदद करने के लिए। नवोदय विद्यालय के लोगों ने मुझे बताया कि अपने बच्चे, कम्युनिटी के बच्चे अप्लाई ही नहीं करते, उनके पेरेंट्स अप्लाई ही नहीं करते एडमिशन लेने के लिए, जबकि वहाँ एडमिशन जो है उसके जो क्राइटेरिया के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। तो जो खतीब और इमाम साहबान हैं, दे शुड टेल दिस थिंग ड्यूरिंग द फ्राइडे sermon. Then very quickly, I am just running through. We should try that the pre-entry qualification for admission to ITIs is reduced to class 8th. जनरल साहब आपको याद कर ले, मैं आपको अगर आप कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट से आपका कॉन्टैक्ट करवा करके और जहाँ गवर्नमेंट अटक रही है वहाँ कर सकते हैं। प्लीज़ मेक इट एक इम्पॉर्टेंट इशू दिस थिंग कि ITI में एडमिशन, ये बाकायदा रिकमेंडेशन हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट मान चुकी है इसको। सेंट्रल कमेटी का रिकमेंडेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया, लेकिन उसको कम्युनिटी ने फॉलो अप नहीं किया, इस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ITIs में एंड प्री एंट्री क्वालिफिकेशन जो है दैट शुड बी रिड्यूस टू क्लास 8th। उससे आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त फर्क पड़ जाएगा पूरे मुल्क में। Second, we should try that the scope of ITI courses is expanded to focus on emerging market needs, including those of the retail sector. Skill development,
हाई ग्रोथ पोटेंशियल जहाँ जहाँ हो उसमें वो ITI के कोर्सेज में शामिल होना चाहिए। इसकी अगर एक कमेटी बना करके इसके ऊपर वर्क कर लिया जाए तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। The eligibility for ITI admission should be extended to madrasa educated children. This is accepted by the Union Cabinet. Implement इस वजह से नहीं हुआ कि हमने और आपने उसकी कोशिश नहीं की है। In private and social life, this is slightly different. In private and social life, people of one community should reach out to the other communities with a subtle purpose to create space in their heart, so that the message of amiable diversity is refreshed. ये भी हमारा एक प्लान होना है बाकायदा systematic. There is some concept known as alternate admission criteria. कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है हम आपके खिलाफ नहीं हैं और हम आपके खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कर दीजिए कि ऑल्टरनेट एडमिशन क्राइटेरिया ये 100% मेरिट नहीं हुए, ये भी जस्टिस सच्चर कमेटी का रिकमेंडेशन है, एक्सेप्टेड बाय यूनियन कैबिनेट, एक्सेप्टेड बाय द कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज एटसेट्रा। फॉलो अप नहीं हुआ, कम से कम उन स्टेट में जहाँ पर मुमकिन हो ये किया जा सकता है। वो कहते हैं कि 60% मेरिट का कंसिडरेशन होगा टू डिसाइड कि हु विल बी एडमिटेड। फाइनल लिस्ट ऑफ एडमिशंस स्टूडेंट्स की निकालने के लिए 60% मेरिट, 40% बैकवर्डनेस ऑफ द कैंडिडेट। जो ज़्यादा बैकवर्ड होगा उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे एंड दैट बैकवर्डनेस इज इक्वली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड इनकम, बैकवर्डनेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स एंड बैकवर्डनेस और बैकवर्ड क्लास टू विच द स्टूडेंट बिलोंग्स। ये हमने कभी टेकअप नहीं किया मामला, ये इसकी डिटेल्स थोड़ी सी है। Then we will have to consider, the community will have to consider providing hostel facilities for boys and girls in big cities like Lucknow. We should also provide tutors for remedial classes. ये तो बहुत आसान है, हर इंडिविजुअल भी कर सकता है, tutors for remedial classes. One more important जो मैं भी आपसे कह रहा था कि we should establish reading rooms and information centers. That we should establish in the masjids. मस्जिद में जो सबसे छोटा कमरा हो वहाँ 5 वक्त की नमाज भी हो, लेकिन वहीं पर एक वॉल टू वॉल कारपेटिंग करके तकिए लगा करके ऊपर शेल्फ और वो इंफॉर्मेशन सेंटर और रीडिंग रूम बना लिया। ये हमने काम शुरू किया है और काफ़ी जगह ये काम काफ़ी मीन्स नंबर वाइज हुआ है, लेकिन जाहिर 91% भी नहीं हो पाया अब तक। तो ये भी आप कंसिडर करें, काइंडली टेक इट अप विद। उर्दू में बुक्स की बहुत कमी है, बहुत सी स्कीम्स जो हैं उसका हम फ़ायदा हमारे बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हम उनको नहीं याद दिलाते हैं। तो हमें बड़ा ज़रूरी है इसकी तरफ तवज्जो देना। इक्विवेलेंस टू मदरसा सर्टिफिकेट फॉर सब्सिक्वेंट एडमिशंस इनटू इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लेवल, ये सिर्फ जामिया मिलिया, लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमदर्द और वो करती है हैदराबाद वाली यूनिवर्सिटी। जबकि जो यूनियन कैबिनेट का डिसीजन है वो ये है कि सब यूनिवर्सिटीज़ करेंगी, तो उसको फॉलो अप करने की ज़रूरत है। बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर 4-6 यूनिवर्सिटीज़ में भी हमारा काम हो जाता है तो काफ़ी बात आगे बढ़ सकती है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अब तक आज तो बात नहीं भी है कभी, फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स। अभी क्या है, पहले डिस्ट्रिक्ट जो है वो यूनिट हुआ करती थी, उसमें बड़ी गड़बड़ियाँ थी, उसके बाद ब्लॉक को बना दिया गया था, प्लानिंग कमीशन ने किया था। वी शुड इंसिस्ट कि विलेज शुड बी द बेसिक यूनिट फॉर डिसाइडिंग कि कहाँ स्पेशल स्कीम लगाई जाएगी। I think I'm done. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah says that He will not change the condition of people until they change what is in themselves. So let us get going. Thank you very much. Wa akhiru da'wana.